हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संकल्प ट्यूटोरियल्स एजुकेशनल वीडियो। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ रिगार्डिंग जेई एडवांस 2015 सम सॉल्व्ड एग्जांपल इन केमिस्ट्री। तो यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, काफी एग्जाम में रिपीटेटिवली पूछे गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस का काफी कोरिलेशन है विथ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सो फॉलो दिस विथ प्रॉपर अटेंशन। तो वन बाय वन हम कुछ सम्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि 2015 के जेई एडवांस पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें बोला गया था कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट डब्ल्यू इज। तो जो स्टार्टिंग मटेरियल है आपको दिया गया है एनिलीन, जिसका रिएक्शन किया गया है NaNO2 विद HCl एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप जानते हो कि ये जो रिएक्शन है ये टिपिकल केस है ऑफ डाइजोटाइजेशन टाइट्रेशन डाइजोटाइजेशन। इवन इसके टाइट्रेशंस भी होते हैं। सो ये डाइजोटाइजेशन का केस है जिसमें प्राइमरी एरोमेटिक अमीन जब NaNO2 और HCl से रिएक्ट होता है तो ये NaNO2 और HCl रिएक्ट होकर पहले बनाते हैं HNO2 दैट इज नाइट्रस एसिड, एंड दैट नाइट्रस एसिड फॉर्म्स डाइजोटाइज कंपाउंड ओवर हियर, डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये जो V है दैट इज योर डाइजोनियम सॉल्ट। अब ये डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन हो रहा है विद दी नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल इन NaOH, और आपको प्रोडक्ट मिलेगा W। अगर आप एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक ही सिर्फ पढ़ते हो तो आपको लगेगा कि क्वेश्चंस लिटिल बिट आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है। बट अगर आप देखते हो दिस इज द कंटेंट विच इज गिवन इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। जो आपके अजो प्रोडक्ट होते हैं उनमें अगर उनका रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, इफ वी कैरी आउट द रिएक्शन विद द फिनॉल मॉलिक्यूल, तो अगर वो फिनॉल के साथ रिएक्ट होता है तो उसका रिएक्शन पैरा पोजिशन टू द फिनॉल होगा। सो ये है आपका बेंजीन का डाइजोनियम कंपाउंड। दिस डाइजोनियम कंपाउंड इज रिएक्टिंग विद द फिनॉल और आपको मिला है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन विच इज एन ऑरेंज कलर डाई। सेकेंडली ऐसा ही रिएक्शन एनिलीन का भी हो सकता है जिसमें आपको येलो कलर का कंपाउंड मिलेगा विच इज पैरा अमाइनो अजोबेंजीन। तो अगर आपने सिर्फ इतना कंटेंट पढ़ा है और आप वो क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके दिमाग में डाउट आएगा कि यहाँ पर हम पैरा पोजीशन पे कैसे अटैक दिखाए, बिकॉज यहाँ पर पैरा तो ऑलरेडी इज अ अटैच विद दिस बेंजीन। सो इसके लिए आपको एनसीईआरटी का जिन स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल हैंडबुक पढ़ा है उनको यहाँ पे डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो इन एनसीईआरटी प्रैक्टिकल हैंडबुक ऑफ 12th स्टैंडर्ड देयर इज एन एक्सपेरिमेंट टू प्रिपेयर फिनाइल अजो बीटा नेफ्थॉल एंड अजो डाई। तो यहाँ आप देख सकते हो इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। ये आपका डायरेक्ट बोनस हो जाएगा अगर जेई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इट्स अ 2015 पेपर। तो आप देख सकते हो कि जिन भी स्टूडेंट ने ये प्रैक्टिकल हैंडबुक अच्छे से पढ़ा है उन्होंने डेफिनेटली इस क्वेश्चन में पूरे मार्क्स अचीव किए होंगे और उनका रैंक्स अपग्रेड हुआ होगा। So aniline is an aromatic primary amine. Already I said it formed diazonium salt when treated with the nitrous acid at 0 to 5 degree Celsius. तो वहाँ रिएक्शन में ये दिया था। Then you got this as an intermediate which is a diazonium compound. ये डाइजोटाइजेशन इस रिएक्शन को बोला जाता है। देन इट रिएक्ट्स विद बीटा नेफ्थॉल। तो बीटा नेफ्थॉल के साथ ये एक ऑरेंज रेड कलर का डाई बना रहा है। सो OH के एडजेसेंट पोजीशन पे एज अ नेक्स्ट टू यू कैन से बेंजीन रिंग इन बिटवीन दिस अटैक विल अकर। सो आप यहाँ ऑप्शन में देख सकते हो कि यहाँ पर अटैक तो नेक्स्ट बेंजीन रिंग पे दिया है तो सी कैन नॉट बी योर आंसर। यहाँ पर भी अटैक नेक्स्ट बेंजीन पे दिया है सो दिस कैन नॉट बी योर आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अटैक इज शोन एज इट वी हैव सीन इन अवर यू कैन से प्रैक्टिकल हैंडबुक। सो योर आंसर विल बी ए। सो ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। सो आई नो दैट यू नो द लेवल ऑफ जेई एडवांस। सो कंसिडरिंग द लेवल आई फील दैट दिस इज द इजी क्वेश्चन वेयर यू शुड गेट फुल मार्क्स। सो ये क्वेश्चंस नीट में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी रिपीट हो सकता है। सो डू दिस केयरफुली। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर द मेजर प्रोडक्ट यू इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो आपको दिया है बेंजीन। बेंजीन का रिएक्शन उन्होंने किया है प्रोपीन के साथ एट हाई प्रेशर एंड हीट। सो यू गॉट अ टी। उसका रिएक्शन रेडिकल इनिशिएटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यू गॉट यू। सो अगर हम इसका कोरिलेशन विद एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ देखते हैं तो यू विल फाइंड कि ये इतना कोरिलेट नहीं होगा।
but still it is having 70% correlation with your NCERT content. ये क्वेश्चन देखते ही काफी स्टूडेंट को तुरंत क्लिक हो गया होगा कि कौन से रिएक्शन की बात चल रही है। तो ये एक वन ऑफ दी वेरी यू कैन से वेल एक्सेप्टेड मेथड है फॉर फिनॉल। यहाँ लिखा भी है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ द फिनॉल इज फ्रॉम क्यूमीन। सो हमने यहाँ देखा था जो स्टार्टिंग मटेरियल था दैट वाज बेंजीन रिएक्टिंग विद प्रोपीन। सो जब बेंजीन का प्रोपीन के साथ रिएक्शन होता है सो फर्स्ट देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ क्यूमीन दैट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन रहेगा दैट विल बी योर टी। नाउ दिस आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज रिएक्टिंग विद रेडिकल इनिशिएटर एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्यूमीन है O2 के साथ, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। सो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा जिसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, देन यू विल गेट फिनॉल। तो यहाँ पे जो रिएक्शन दिया है दैट इज अप टू you can say you can say that intermediate peroxide. So you can find that peroxide linkage is present in this compound also, here also and here also. So यहाँ पर आप देख सकते हो all these four options is having peroxide linkage. So that will not solve your you can say problem. यहाँ पर देखिए कि जो peroxide linkage है उसका जो कार्बन है उस पे दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो you can see this peroxide linkage, okay, जिसका ये कार्बन है जिसपे 2 मिथाइल है, so B will be your answer. So again I consider that this is little bit tough as compared to previous because previous was a direct question. यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने आपको फिरकी दिया है, आपको पहले पता होना चाहिए कि इससे क्या बनेगा, that is क्यूमीन। और नेक्स्ट पार्ट तो I know it's directly from NCERT. Now the next question, among the following the number of reaction or reactions that produce or produces benzaldehyde. So this is multiple answer correct type of question. So इसका जो first reaction है that is benzene with COHCl anhydrous AlCl3CuCl. I know जिसने NCERT बहुत अच्छे से पढ़ा है ये will definitely say कि ये तो Gatterman-Koch reaction है जिसमें benzaldehyde बनता ही है। ये जो second reaction है इसमें थोड़ा सा twist किया गया है, H2O 100 degree Celsius and you got this as a you can say an halide. So ये जो halide का जो फॉर्म हुआ है ये बन रहा है फ्रॉम we can say मिथाइल बेंजीन से। सो ये रिएक्शंस इनडायरेक्टली पूछा गया है। दिस इज साइड चेन क्लोरीनेशन रिएक्शन। आई विल शो इट्स फ्रॉम एन एनसीईआरटी। टोल्यून है जिसका हम क्लोरीन और यू कैन से फोटोन के साथ जब रिएक्शन करेंगे क्लोरीनेशन होगा, वी विल गेट डाइक्लोरो कंपाउंड दैट इज बेंजाइल क्लोराइड जिसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। यहाँ पे 373 लिखा, वहाँ पे 100 डिग्री लिखा था। इट्स वन एंड द सेम थिंग, यू गॉट बेंजाल्डिहाइड। सो अगेन इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये दोनों भी मेथड हमने देखे है कि दिस इज Gatterman-Koch रिएक्शन, बोथ दिस गिव्स बेंजाल्डिहाइड। सो इसमें डेफिनेटली आंसर 1 इज करेक्ट, 2 इज आल्सो करेक्ट। थर्ड इज अ यू कैन से अ केस ऑफ स्टीफन रिएक्शन। सो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं you can you can see over here, no, it's a Rosenmund reaction. So sorry, so this is Rosenmund reaction where benzoyl chloride react with palladium barium sulfate reducing agent, you will get the benzaldehyde as a product. So again it's a direct question from the NCERT. This last one is little bit indirect. In NCERT they have not mentioned that which type of ester, but definitely the reaction of Dibble is given, so you can read over here. Alternatively, nitriles are selectively reduced by diisobutyl aluminum hydride that is double to amine followed by hydrolysis. और यहाँ पर एक रिएक्शन दिया है esters are also reduced to aldehyde with the double. तो यहाँ पर हमको जो दिया that is aromatic ester और जो केस NCERT में that is of aliphatic ester. So these all reactions will give you benzaldehyde as a product. Now the next question. You are having a compound as a C8H6 जिसका रिएक्शन पैलेडियम बेरियम सल्फेट H2 के साथ किया है। सो जस्ट वी हैव सीन एज अ रोजेनमुंड रिएक्शन जिसको हमने यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट बोला था। यू विल गेट C8H8। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो हाइड्रोजन का एडिशन है, इट्स अ रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट इज B2H6, then after addition of B2H6 you are adding hydrogen peroxide in NaOH and H2O. Then this C8H6 is reacting with water in presence of mercuric sulfate and sulfuric acid. Then you got C8H8O जिसका रिएक्शन हो रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, एंड देन H प्लस के साथ आप हीट कर रहे हो। सो लुकिंग एट द रिएजेंट जिन्होंने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है वो काफी
क्लूज यहाँ पर जोड़ चुके होंगे। तो हम वन बाय वन कोरिलेशन देखेंगे कि ये सभी रिएजेंट्स एनसीईआरटी में कौन कौन से पेज पर दिए हैं, सो दैट यू कैन गेट योर आंसर इजीली। यहाँ पर आपको एक्स और वाई का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। सो देर आर 4 ऑप्शंस विच आर गिवन फॉर एक्स एंड 4 ऑप्शंस विच आर गिवन फॉर वाई। सो सबसे पहले आप अगर यहाँ देखते हो C8H6 है, तो ये फॉर्मूला आपका CnH2n-2 से मैच करता है। सो इट्स अ फॉर्मूला ऑफ अल्काइन। अल्काइन का जब आप पीडी विथ बेरियम सल्फेट के साथ रिडक्शन कर रहे हो, तो यू गॉट C8H8, सो दिस विल बिकम CnH2 दैट इज अल्कीन। सो अल्काइन से आपको अल्कीन मिला। एंड यू कैन सी दिस इज C8H6, सभी कंपाउंड में बेंजीन रिंग दिया गया है। सो डेफिनेटली C6H6 इज अ बेंजीन पार्ट। So remaining 2 carbon जो है that is outside benzene. So here there will be a benzene nucleus. That benzene nucleus will be having 2 carbon outside it, and there will be, you can say, 1 hydrogen to it. So this particular structure, if I want to draw, I can say it will come as a benzene nucleus, and that benzene nucleus will be having a side chain where the other 2 carbon will be there. So I can say there is a carbon as a C, and there is now only 1 hydrogen in hand with me. So this should be again triple bond because I know it's an alkyne. So this makes up the total 8 carbon, and this 1 hydrogen, so it makes up total 6 hydrogen. So in this way this is the structure जिसका हम reduction करेंगे. So this is a catalyst which is used as a Lindlar's catalyst, which gives you a trans as an you can say an alkene. So here this bond will change and you will get the intermediate next as a again styrene. I will say, if you know the name of the compound, it's a benzene nucleus where there will be C, then double bond, then here it will become as a C, and then here as a H, here as a H, and again here as a H. So you got total 8 carbon and 8 hydrogen structure. Now this is a very common reagent which is used to prepare an alcohol from alkene. It's a direct reaction from the NCERT. So this is what I said about, you can say, Lindlar's catalyst. Sorry, it gives you a cis product. It's not trans. So Lindlar's catalyst composition. Next to that, this is the reaction which I said, which is given directly in the NCERT, hydroboration followed by oxidation. So this is the reagent for hydroboration, and these are the reagents which were given for the oxidation. So hydroboration oxidation is an addition of the borane, and it occurs in such a way that always you will find that there is an addition of the water to the alkene opposite to Markovnikov addition. So we can say over here you will get the product as a alcohol. Okay, so first you will get that alkene and then water is getting added. So it has been said you will see the answer, or you can say the outcome as a product, that water is added as per anti-Markovnikov. So what does Markovnikov say? Whenever unsymmetrical reagent reacts with unsymmetrical alkene, negative part goes to the carbon containing lesser number of hydrogen. So anti-Markovnikov will come as a containing more number of hydrogen. So your answer will come as a C. Now next to that, they said this product which you had as an alkyne, you are carrying out the reaction with HgSO4 H2SO4. So this is a reaction where there will be formation of aldehyde and ketone by the tautomerism concept, and then that aldehyde and ketone is reacting with this, you can say Grignard reagent. So the reaction will go as, this is that reaction which is given in 11th standard NCERT, that is HgSO4 H2SO4. You will get the ketone as the product by tautomerism. So how it is applicable in our case? So this starting material which we have considered over here will undergo the addition of HgSO4 H2SO4, or we can say simply addition of water, and you will get the intermediate where this carbon will have a double bond O. Okay, and here I will say it will remain as a CH3, because first दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन ऐड होता है, then वो टॉटोमेरिज्म से it will, instead of giving you aldehyde, will give you an alcohol, will give you a ketone. Sorry, not alcohol, it's a ketone by tautomerism. Now this ketone is reacting with Grignard reagent. So we know कि जब Grignard reagent का addition होता है तो यहाँ पर this will remain as a benzene nucleus, or
further addition, we have to show that this carbon will be there. Here there will be a CH3 as we have seen in the structure. And now to this CH3, we know that we have to show one as a ethyl group. So I will make it as a CH2 CH3 so that the next part I can draw easily. And upper part I have to make as an alcohol. तो यहाँ पर हो गया है ये alcohol. Now if I show this as an alcohol, next I am adding H ions to it. So this will get protonated. फिर ये प्रोटोनेट होके आई कैन से दैट एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और ये अल्कोहल से ये H निकल के देयर बी फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड ओवर हियर. So your answer should ideally be ethyl group will remain as such and here there will be a double bond formation. So we can say answer can be C. So this is वी नो कि यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरफ भी बन सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी बन सकता है. सो आंसर कैन बी दिस सी, आंसर कैन बी दिस टी. So we have to now apply our Setzeff rule that which alkene is a more stable. So looking at the Setzeff rule, your answer will go as a T. क्योंकि आप अगर यहाँ से ग्रुप हटाओगे तो this will have a 2 hydrogen and only 2 R group are present. Here if we say only 1 hydrogen and 3 R groups are coming. So this is again we can say is matching with first this addition where it is said that you will get a product as a isomerization, that is nothing but your tautomerism concept where this alcohol will become removal and the ketone. And next is Grignard reagent, when it adds to ketone you get the alcohol. तो ये concept use हुआ है. So this is about the previous question. Now next and last question which I am discussing in this series is under hydrolytic condition the compound used for preparation of linear polymer and for chain termination respectively are. So आपको ये बताना है कि एक linear polymer हम synthesize कर रहे हैं तो वो लीनियर पॉलीमर बनाने के लिए इसमें से कौन सा रिएजेंट यूज हो सकता है, फॉर टर्मिनेशन कौन सा रिएजेंट यूज सकता है. आप देख सकते हो सभी जगह सिलिकॉन दिया है, मींस इट्स सिलिकॉन का लीनियर पॉलीमर. It's a very direct question from the NCERT. You will find over here that hydrolysis of dimethyl dichlorosilane produced by condensation polymerization yield straight chain polymer. तो जब आपके पास दो साइड ब्लॉक रहेंगे that is dichloro and only two side there will be OH group. So that means two side Cl group initially which will become hydrolysis से OH group. So dichloro dimethyl silane का पहले हो जाएगा dihydroxy dimethyl silane, then it will give you a chain growth on a linear side और उनके से parallel. Then we want to stop this chain growth. So to stop that chain growth you will require the chain length of the polymer can be controlled by adding trimethyl monochlorosilane. So in this way you will get a silicone as the product. So it's a direct question from the NCERT. So we can say out all these 5 questions which I have discussed here with you. The question number 34 was a very direct question from the NCERT. This was even a conceptual and too much applied, but I don't feel that it is having a very high difficulty level. It's a medium difficulty level question. So this was a question of near about 4 to 8 marks in that JEE paper. Now this is again the question where there was multiple answer correct. Again it is from NCERT. This is having a little bit the intermediate level and this is the easy level question. So it is not a case कि JEE में एडवांस में हमेशा बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. अगर आपने NCERT के हैंडबुक्स उनका एग्जाम्पलर रिलीजियसली प्रैक्टिस किया है तो यू कैन डू एक्सेल इन JEE एडवांस ऑल्सो. दिस वीडियो इज इक्वली हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि JEE एडवांस के जो क्वेश्चन है वो कभी JEE मेंस में भी पूछे जाते हैं, कभी कभी वो नीट में भी आते हैं. So this is all about my today's video. If you like it, please comment, share it with your friends and subscribe my channel. Your comments are very much welcome. Thank you for watching my video.